Chapter 3, Metals and Non-Metals. Okay, we are going to continue the chemical properties of metals and non-metals. Now the third chemical property is reaction of metal with other metal salt. Then how one metal can react with other metal salt, that we have to see. Okay, for seeing this, first you must know the reactivity series that already I told you in the displacement reaction of first chapter. What is that? You have to learn this: Ka, Na, Ka, Mag, Alzan, Fe, Pab, Hakku, Hungary, Silver, Gold, Platinum. Okay. Now Ka means K, Na. Na के लिए क्या लिखते हैं? Na, N. A के लिए A. So it is Na. Ca. You have to learn in the same order. Otherwise you cannot do the reactions easily. Okay. So you learn this series. Now see how you have to use the reactivity series for the displacement reaction. What is given? First reaction I am writing ZnCl2 plus Ca. Now see, as the reaction is written, what you have to see, जो अकेला metal है वो अगर ऊपर है series में, then it can displace other metal from the salt solution. Okay, otherwise not. Now see what is there. Calcium is above the zinc, means the reaction can takes place. So reaction होगी तो क्या होगा? ये बन जाएगा CaCl2 plus Zn. Okay. In the same manner, one more reaction I am taking, that is FeSO4 plus Zn. Now see here what will happen. Here Zn is above than Fe, means it is more reactive. इसमें ताकत ज्यादा है ना? जो ज्यादा ताकत वाला आएगा तो क्या बोलेगा? प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए, तो वो इसकी जगह आ जाएगा और ये अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा, है ना? देन व्हाट वी विल गेट? ZnSO4 plus Fe. Now one more reaction I am writing. Okay, you see it very nicely. Okay, the reaction is AlCl3 plus Cu. Now reaction is possible or not? How you will see? See what is there? Al above, Cu downward side, means copper is less reactive than aluminium. As it is less reactive, इसमें तो ताकत है ही नहीं aluminium को हटाने की. Then what will happen? It cannot go for reaction, means your answer will be no reaction. What this? So in this manner you can see whether the reaction is possible or not, and for that what you have to learn? You have to learn this reactivity series. Okay, now see, some few questions are given on page number 46 of old book. We are going to discuss them. These are the in-text questions. Okay, see, first is why is sodium kept immersed in kerosene oil? That already I discussed you in the video, and in the description the answer is given. Okay, that sodium is highly reactive metal. It reacts with the atmospheric moisture, air, and form hydrogen gas is evolved. The reaction is highly vigorous. The large amount of heat energy is produced, and that heat is sufficient to burn hydrogen. That's why we have to kept inside the kerosene oil. Second, write the equation for the reaction of iron with steam. है ना? That already I told you. Iron with steam. What is there? Fe plus H2O. Steam में तो क्या लिखोगे? Gas. Then it will give Fe2O3 plus H2. Iron oxide will form. Okay. Now next is calcium and potassium react with water. That already given in the previous section. Okay. Now see question number 3. In question number 3, a sample of 4 metals A, B, C, D were taken. है ना? कितने मेटल लिए इन्होंने? They have taken 4 metal A, B, C and D. Then 4 solutions are given. पहला solution दिया है FeSO4, second is given CuSO4, third is given ZnSO4, and fourth is given AgNO3. Okay, so 4 solutions are given. Then with the A, what is reaction? No reaction. Okay. Second में क्या लिखा है यहाँ पर? Displacement. Third is again no reaction, and fourth is again no reaction. Here with copper it is written displacement. Okay. I am writing short form. Then dash. Then no reaction.
and again no reaction. Here dash, then no reaction, no reaction, no reaction. Here dash, dash, displacement and no reaction. Okay, this is given to you in the question. Now what they are asking, which is the most reactive metal? कैसे पता करेंगे? See, this is your metal. Okay, it is no reaction with Fe. Fe से reaction नहीं हो रही है, मतलब क्या हो गया? ये Fe से less reactive हो गया है ना. But it can displace copper, मतलब Fe के नीचे और copper के ऊपर कौन बचा? Because your hydrogen is non-metal, है ना. क्या कह रहे हैं? नो रिएक्शन विथ Fe से रिएक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब इट इज लेस रिएक्टिव देन Fe से लेस रिएक्टिव है तो Fe के नीचे आएगा. एंड बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ कॉपर, यानी कॉपर से ऊपर होगा, तो कौन आ रहा है? Pb, मतलब अपन यहाँ पे मान लेते हैं A एक्ट एज अ Pb. ठीक है. देन सेकेंड व्हाट इज गिवन, B give displacement reaction with Fe means it is more reactive than Fe से ज्यादा रिएक्टिव हो गया. ठीक है. एंड नो रिएक्शन विथ Zn, तो Fe से ज्यादा रिएक्टिव हो रहा है तो कौन होगा? जिंक इटसेल्फ, क्योंकि जिंक से रिएक्शन नहीं करेगा. अगर इसके ऊपर जाते हैं तो ये जिंक से भी रिएक्शन करेगा. सो व्हाट इज देयर? योर बी विल बी Zn. ठीक, ऐसे ढूंढना है. नाउ सी, नो रिएक्शन विथ Fe, मतलब Fe के नीचे नो रिएक्शन विथ कॉपर के भी नीचे कौन आ गया? ये तीनों आ गए, Hg, Ag एंड Au. देन व्हाट इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट विथ Ag, मतलब किसके नीचे हो गया? कॉपर के नीचे और सिल्वर के ऊपर. कॉपर के नीचे सिल्वर के ऊपर कौन आया? Hg, मीन्स योर C विल बी Hg. एंड फोर्थ व्हाट इज रिटर्न, नो रिएक्शन मीन्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द Fe से नीचे. नो रिएक्शन विथ कॉपर के भी नीचे. नो रिएक्शन विथ जिंक के भी नीचे. कॉपर के नीचे कौन आ गए? एंड नो रिएक्शन विथ सिल्वर के भी नीचे. सिल्वर के नीचे कौन हो गया? गोल्ड या प्लेटिनम. मतलब डी को अपन क्या मान ले? गोल्ड मान ले. ठीक है. नाउ सी, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन हो जाएगा सबसे ज्यादा? Zn इनमें सबसे ऊपर है. सो मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, पहले का आंसर बता रही हूँ, फर्स्ट का मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन हो गया? They are asking, they have given ABCD, so you also write the answer in ABCD, है ना. तो कौन आ जाएगा? B. Then for second, what would you observe if B is added to the solution of copper sulfate? B क्या है? Zinc है ना. मतलब when Zn is going to react with CuSO4, you know the displacement reaction क्या बनेगा? It will give ZnSO4 plus Cu. It is colorless and you will get the reddish brown color of copper. So this is the observation, है ना. Third, what is given? Arrange the metal in order of decreasing reactivity. Decreasing मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाना है तुमको. Means most reactive to least reactive. सबसे ज्यादा reactive कौन था? जिंक, मतलब ये B हो गया. फिर greater than जिंक के बाद कौन आता है? Pb आ रहा है. Then Pb means A. फिर कौन आ रहा है? C, Hg, C और D. Okay, so this is your decreasing order of reactivity C. Clear now? Now next question. Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to the reactive metal? You know hydrogen gas is evolved, है ना. Reaction लिख देना, Fe plus H2SO4, है ना. FeSO4 plus H2. Then what would you observe when zinc is added to the solution of iron sulfate? Zn plus FeSO4. बोलो, ये बना Zn plus FeSO4. जिंक मोर रिएक्टिव क्या बनाएगा? ZnSO4 plus Fe. क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन, अ कलरलेस सॉल्यूशन एंड ब्लैक डिपोजिशन ऑफ आयरन. व्हाट दिस नाउ? ओके, थैंक यू.